हेलो गाइज, वेलकम टू फिल्मी मंत्रा। आज मेरे साथ प्राची देसाई है और यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हम ज्वेलरी के साथ। प्राची, सबसे पहले तो यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? कौन सी फेवरेट पीस ऑफ ज्वेलरी है आपकी? वेल बहुत अच्छा लग रहा है. माई एसोसिएशन विद फॉरएवर मार्क डायमंड्स हैज़ बीन अ लॉन्ग वन, एंड इट्स ग्रेट बीइंग हियर टुडे. ऑफ कोर्स इट्स बीन 5 years of association of Om Jewellers and Forever Mark. I don't think a girl needs a reason or an excuse to come and take a look at diamonds. I think they always compliment us so well, and I know which is my favorite piece from here today. I kind of like minimalistic styles, so there's something as per that I've already chosen. अच्छा, जैसे आपने कहा कि काफ़ी मिनिमम ज्वेलरी पहनना पसंद है, तो किस तरह की ज्वेलरी आप मतलब रियल लाइफ में कैरी करती है, या फिर जब आप किसी शादी में जाती है या फिर कोई फंक्शन में जाती है तो किस तरह की ज्वेलरी पहनना पसंद करती है? उसमें कोई डिफरेंस आता है आपकी चॉइसेस में? Actually, honestly, the jewelry always totally depends on the outfit. जो भी outfit पहना है उसके हिसाब से sometimes it's very modern jewelry, sometimes it's maybe you can experiment a little and make a combination of something traditional as well as a little modern with a modern touch. So those kind of things. So I think that always depends on the outfit. अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे फैंस हैं आपके, तो उनके लिए कुछ मतलब जो मेमोरीज है आपकी ज्वेलरी को लेकर कुछ बताना चाहेंगे कि किस तरह की मतलब जब भी पहली कोई ज्वेलरी खरीदी हो आपने, ऐसी कोई मेमोरी, या फिर किसी ने आपको गिफ्ट दी हो, अगर आप अपने फैंस को बताना चाहें? Well, sure. Actually, मेरी जो पहली jewelry, the first thing that I ever owned was gifted to me by my grandmom. So that's always going to be very special. And something that I bought for myself the first ever time was actually जब मैं अपनी बहन की शादी के लिए उसे हेल्प करने गई थी to pick out some jewelry for her. Before she could buy anything, I fell in love with the ring and I bought it for myself. So I didn't want to wait for anyone to give me a ring. I said this is the ring that I love and I want, and I picked that out. That's how I bought my first ever jewelry. अच्छा, इसके अलावा सबसे ज़्यादा आपके वार्डरोब में क्या देखने मिलेगा ऑडियंस को अगर आपके घर में आ जाए तो? You have to ask my mother about that nightmare, or actually anybody who comes to my house, and I don't know what I have more, whether it's shoes, whether it's jeans, whether it's clothes. I just feel like they're never enough. They're just never enough. राइट. इसके अलावा प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है? कौन सी फिल्म में नज़र आने वाली है आप? और मतलब फिल्म की चॉइसेस आप खुद करती है या फिर मॉम डिसाइड करती है या फिर कोई और डिसाइड करते हैं? Well, actually, in my life, all my decisions are based on my own choices. So nobody else is I'd say nobody else is involved as such. I choose the films that I do or whatever else that I do. जहाँ तक फिल्मों की बात है, I'm kind of very picky and choosy about the projects that I do, because I want to make sure that something about it is amazing. Something about the team, or maybe it's a director that I want to work with, or maybe it's just a role that I really want to do. So yes, I am choosy and picky when it comes to films. There's something that I have actually already completed. I've been a part of. वो अभी थोड़ा under wraps है. We haven't spoken about it, although we've completed it. But the announcement is going to be made very soon, so you'll hear about it. It's something very interesting that we've done. राइट. इसके अलावा बहुत सारे जॉनर्स में आपने काम किया, लेकिन ऐसा कोई जॉनर है जिसमें प्राची देसाई का ड्रीम है कि मैं इस जॉनर में काम करूं? I think I've never been a part of a love story, like it could be I don't know, a musical love story. It could be a mysterious love story, but a love story. I think that's something that I've never been a part of. I would love to do that. So anything you want to say to your audience or your fans? Of Filmy Mantra? Yeah. Well, I'd just like to tell everyone from Filmy Mantra that it was great being here today. This was a great chat, and keep watching Filmy Mantra. And every time you want to pick out a diamond, you know where to come. ओके, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए. और ये थी प्राची देसाई हमारे साथ. आप प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फिल्मी मंत्रा. थैंक यू सो मच. Hi, this is Prachi Desai, and you're watching Filmy Mantra.